welcome to APTI Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs from December 15th to December 21st. So let's begin with the first topic. So the first topic is related to the revamp of MG Narega scheme. So it has been replaced by VBG Ramji now. So basically the 2005 MG Narega Act, so it has now undergone a structural overhaul, right? So the basic thing that you have to remember is that it has shifted from a demand driven social security law to a centrally designed co-funded rural employment mission now. So this is important that it was demand driven social security law and now it is a central designed and co-funded mission. Now what are the major shifts? So number one, the number of days that has increased from 100 to 125. ठीक है, अब 125 days का होगा and this is because the average work during MG Narega, it was around 50 days only. So very few households, they were exhausting the 100 days limit. ठीक है, and there a new constraint has also been added that a 60-day compulsory pause has been added during the sowing or the harvesting season. ठीक है, so basically this is for the agricultural sector. Now if I talk in terms of the funding pattern, so this has seen the biggest shift. So earlier under MG Narega, the center paid 100% wages. Okay, and now under this VBG Ramji, the ratio would be 60-40 for the central, the general states, and 90-10 for the northeastern and the Himalayan states. And the UTs which do not have the legislator, so 100% central funding would be there. So this would put a extra burden of around 30,000 crore rupees on the states. ठीक है, तो ये एक important point है. Then if I talk about the allocation mechanism, तो जैसे कि मैंने बताया दैट MG नरेगा इट वाज बॉटम अप लेबर बजट. ठीक है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंटर, तो ऐसे डिसाइड होता था. सो इट वाज डिमांड बेस्ड. नाउ इट इज टॉप डाउन. So a normative allocation would be fixed by the center, and if there is excess demand, that has to be paid by the states themselves. ठीक है, तो जो हाई डिमांड स्टेट्स हैं लाइक योर तमिलनाडु, यूपी, बिहार, ठीक है, एंड देन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, so these are at a disadvantage. Yes. So if I talk about now the planning and work architecture, so the work will originate from the Viksit Gram Panchayat plans, right? So these have now been aggregated into Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. So there would be 4 focus area, that is the water security, rural infrastructure, livelihood infrastructure, climate and extreme weather mitigation. So these all have been integrated with the PM Gati Shakti mission also. Now job cards, they have been replaced. So we will have now Gramin Rojgar Guarantee Card. So it will have a validity of 3 years and it will be renewable in nature. And special cards would be there for say single women, PWD, elderly, PVTGs, bonded laborers, transgender, etc. And the penalty for violations, that has also been increased from 1,000 rupees to 10,000 rupees. Yes. Now if I talk about in terms of fiscal space, so in the financial year 25 MG Narega, the budget here was 1.05 lakh crores. ठीक है, 1.05 lakh crores, and for VBG Ramji it is estimated to be around 1.51 lakh crore. Out of these around, ठीक है, 1.51 होगा, 95,700 crore rupees would be the central share and the remaining would be from the states. ठीक है, so this is regarding the new VBG Ramji. So it has been passed by the parliament also and it has received the presidential assent. Next, India Oman trade deal.
So this is basically important because this is India's second trade pact in West Asia after the 2022 deal with UAE. Okay. So it has also to be seen in the background of the rising trade curbs in the Western economies, especially the trade protectionism in the US and the carbon linked regulations and non tariff barriers in the European Union. So India, it is now currently pursuing FTA-led trade diversification. Yes, this is to reduce the dependence on uncertain Western markets. So this is the basically context in which we have to see this. Now the question arises, why Oman? कि ओमान के साथ ही क्यों? Because it is a smaller and less diversified market. So the imports are roughly around 40 billion US dollars every year, but it has a strategic geographical location. ठीक है, it connects West Asia, it connects Eastern Africa, and it passes through global shipping routes. So this is important. And the India GCC FTA talks, they have been stalled. So India now is pursuing this mode, that is of the bilateral FTAs. So दो GCC members के साथ हो गया, UAE and Oman. So Oman, it will offer zero duty access on 98% of the tariff lines. So the key Indian export gains would be machinery, engineering goods, aircraft parts, iron and steel, and so on. So the Indian exports to Oman, they will double from 3 billion to $6 billion in 5 years. Okay, so this is the regarding the goods trade impact. Now in terms of supply chain and re-export value, so Oman, it has an FTA with US since 2009. Okay, so due to that, it allows duty free access for many products, right? So there is a scope for regional value chains and re-export hubs targeting the Western markets, West Asia, as well as Africa. Okay. And in terms of energy and input security, so Oman exports crude oil, LNG, fertilizers. So these inputs, they all are critical for India's energy and agricultural sector, and they are attracting low tariffs. Okay. So in terms of service trade, so Oman's global services import are roughly $12.5 billion. आउट ऑफ दिस इंडिया शेयर इज ओनली 5.3%. तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्कोप है एक्सपेंशन का. सो मेजर सेक्टर्स लाइक आईटी, कंप्यूटर साइंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, R&D, ऑडियो विजुअल सर्विसेज एक्सेट्रा. So this is important. So the this particular agreement, it enhances the mode for mobility. So basically अब क्या होगा, द ICT, that is the intra corporate transferees quota, that has been increased from 20 to 50%, and the contractual service stay, that has been increased from 90 days up to 4 years. So these are important. So overall, if we see this agreement, it has a strategic significance for India due to as it reduces export vulnerability to the Western protectionism. Secondly, it strengthens West Asia trade footprint. Third, it enhances services-led growth and skilled labor mobility. And finally, it also supports India's broader goal of trade resilience through diversified FTAs. Right. Now let's move to the next topic. Now this is regarding the intersex rights in India and why the Supreme Court has recently ordered a review. So the Supreme Court, it has referred a PIL on the intersex rights to a 3-judge bench, right? So they say that there is a need for the constitutional reconsideration of these rights. So the reason is that recently a PIL challenged the conceptual conflation of sex and gender in the existing jurisprudence, especially the नालसा जजमेंट. ठीक है, जो आपकी 2014 की नालसा जजमेंट थी. So this was delivered by a 2-judge bench, hence the reference to a 3 or the bigger 3 judges bench. So the court recognized that the issue, it raises questions of bodily autonomy, of consent, dignity, and as well as equality. So hence the need for a larger bench.
ठीक है। सो सबसे पहले ये अब क्वेश्चन उठता है कि इंटरसेक्स पर्सन्स होते क्या है। सो इंटरसेक्स आर दोज पीपल हु आर बोर्न विद सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेनिटल्स, गोनाड्स, क्रोमोसोम्स दैट डू नॉट फिट इनटू टिपिकल मेल और फीमेल बाइनरीज। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रांसजेंडर्स. Transgender is something related to gender identity. Intersex is related to biological sex characteristics. So transgender is not your biological sex. So this is important. And the law currently it fails to recognize this distinction. Hence, this leads to legal invisibility. ठीक है, तो अब क्या है, what is the core human rights issue here? So there has been a widespread practice of corrective surgeries on intersex infants. That is basically sex assignment surgeries. So they are basically performed without informed consent, and they are also sometimes, you can say many a times, medically unnecessary, and they are irreversible. So they can lead to lifelong physical and psychological harm. So the PIL that has been filed in Supreme Court, it cites instances from your Madurai government hospital to highlight the scale of the problem. Okay. Now, if I talk about the judicial and state level precedents in this case, in this particular issue, so the Madras High Court in the 2019 case of Arun Kumar versus the Inspector General of Registration, it had effectively banned sex selective surgeries on intersex infants. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने अपनी इसमें रूलिंग दी है. तमिलनाडु ने भी, इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग सच सर्जरीज. Then the Delhi Commission for Protection of Child Rights, they have also recommended for a similar kind of ban, right? And the Delhi High Court directed the Delhi government to decide on the recommendation of the commission. Okay? And it is still pending, but obviously they are in favor of the ban. ठीक है, तो अब क्या है, what are the issues, what are the challenges here? So एक बहुत important challenge is that there is no official data that is available on intersex population in India. तो 2011 जो आपका सेंसस है, it clubs these people, these persons under the transgender category in the sex column. तो वो कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन बढ़ता ही है. ठीक है, एंड द बर्थ रजिस्ट्रेशन लॉ ऑफ 1969, द बर्थ रजिस्ट्रेशन लॉ ऑफ 1969, इट फोर्सेस द पेरेंट्स टू चूज आइदर मेल और फीमेल, मिस आइडेंटिफाइंग द इंटरसेक्स चिल्ड्रन एट बर्थ. ठीक है, तो ऐसे में दिस लीड्स टू अ कैस्केडिंग इश्यूज, लीगल इश्यूज, स्पेशली इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, तो अगर आप, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज अ केस ड्यूरिंग द एशियन गेम्स 2006 of Santhi Soundarajan. She lost her medal after the sex verification test. So basically it shows the harm that is caused by binary biological assumptions. तो आपके पास अगर लीगल सेफ गार्ड नहीं है तो आपको ये सब इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, राइट. एंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैटर? तो आपका आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 पिक्चर में आता है. देन आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 बिकॉज ऑफ डिग्निटी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी. ठीक है, आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी, आर्टिकल 15 दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन. So basically it signals a shift from identity recognition to bodily integrity and consent based rights. So this is important. ठीक है. Next topic, that is the India Russia logistics agreement, that is RELOS. So reciprocal exchange of logistics export, it is a bilateral military logistic agreement between India and Russia. So it has been ratified by the Russian parliament and it has been signed into a federal law by the Russian president Putin. So it comes into force after formal exchange of instruments of ratification between the two countries. अब ये provide क्या करता है? What does this agreement provide for? Number one, it sets procedures for the movement, ठीक है, आपका movement of military troops, warships, aircraft, etc.
इट ऑल्सो सेट्स प्रोसीजर्स फॉर योर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे कि रिफ्यूलिंग हुआ, रिपेयर्स हुआ, मेंटेनेंस हुआ, ठीक है। देन इट ऑल्सो अलाउज फॉर द यूज ऑफ ईच अदर्स एयर स्पेस, ठीक है। आप एयर स्पेस भी यूज कर सकते हो, पोर्ट कॉल्स भी हो सकती हैं उसके अंदर। एंड दिस इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द मिलिट्री एक्सरसाइजेज, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एज वेल एज ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज. It is also applicable during HADR, that is humanitarian assistance and disaster relief exercises or activities. And there is fourth also, that is other situations by mutual consent. दोनों पार्टीज को अगर लगता है कि किसी और सिचुएशन में भी ये अलाउ होना चाहिए, देन दे कैन डू सो. तो इंडिया के लिए क्या एडवांटेज है? सो इट दिस बेसिकली प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू रशियन बेसिस. तो रशिया के बेस, लाइक फॉर एग्जांपल इन द पैसिफिक, पैसिफिक में आपका है व्लादिवोस्तोक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन आर्कटिक वी हैव द मुरमांस्क, ठीक है. तो यू मस्ट हैव रेड दीज नेम्स वाइल गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स. तो बेसिकली इट इन्हांसेस द ऑपरेशनल रीच ऑफ द इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है. इट इज ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड आर्कटिक इंगेजमेंट, ठीक है. तो इंडिया को इसके थ्रू 40 प्लस रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज का एक्सेस मिलता है. सो गुड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. नाउ एट द सेम टाइम वाई व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर रशिया? तो अब रशिया को अपने इंडियन पोर्ट्स एंड एयरफील्ड्स का एक्सेस मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है इन द इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है. इट स्ट्रेंथन्स रशियाज मिलिट्री प्रेजेंस बियॉन्ड यूरेशिया and it also strengthens Russia's position in a multipolar global order, ठीक है. तो अभी अगर आप इसको देखें कि इंडिया के एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि आपका लेमेवा हुआ यूएस में, यूएस के साथ, दैट इज़ रिलेटेड टू लॉजिस्टिक एंड रिफ्यूलिंग, देन कोमकासा फॉर कम्युनिकेशन, देन बैका फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस. तो इट कॉम्प्लीमेंट्स दोज एग्रीमेंट्स, ठीक है. बट अनलाइक द यूएस पैक्ट्स, दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इट इज प्लेटफॉर्म न्यूट्रल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूएस के साइड हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट है. एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडिया रशिया डिफेंस इकोसिस्टम. तो ये भी दिखाता है कि इंडिया की जो हमेशा अप्रोच रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, मल्टी अलाइनमेंट की, सो इट इज़ इन सिंक विद दैट. यस. नेक्स्ट, let's move to the next topic now. So Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill of 2025. So this particular bill, it seeks to propose a single overarching higher education regulator. तो आपके जो ये अभी एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स हैं, लाइक द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो इन सब को मर्ज करके एक सिंगल ओवरआर्चिंग आपका हायर एजुकेशन का रेगुलेटर होगा. सो बेसिकली इट विल लीड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रेगुलेशन, इट विल रिमूव ओवरलैप्स, एंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द हायर एजुकेशन. तो ये हायर एजुकेशन के लिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर के लिए. तो इसमें द प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, इट विल हैव 3 काउंसिल्स. सो नंबर 1 वुड बी द विनियमन परिषद, that is the regulatory council. So it will authorize institutions to grant degrees, it will enforce compliance with penalties, ठीक है. ये पहला है. दूसरा है आपका मनक परिषद, दैट इज द स्टैंडर्ड काउंसिल. सो इट विल सेट द लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम फ्रेमवर्क, फैकल्टी क्वालिफिकेशंस. Third is the Gunvata Parishad. So it is the accreditation council, and so it will develop and oversee the accreditation framework. तो ठीक है. तो ये 3 आपके काउंसिल्स होंगे. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, सो इट अप्लाइज टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, institutions of national importance, then technical and teacher education institutions. But at the same time, number of institutions that are excluded are like medical hua, legal hua, then dental, pharmacy, veterinary education. So these all are regulated separately. So the members, they will be now appointed by the president on the center's recommendation, ठीक है.
And this has one criticism, that state's role, it will be limited. So the only one rotational state or UT nominee would be there in the regulatory and standard councils. So this has sparked concerns regarding centralization and the weakening of your federal balance. Okay, so this is one criticism here. Earlier, there were multiple regulators, separate accreditation committees, bodies like NA, AC, NBA. So UGC, it had the power to both regulate and disburse grants. Now there would be single regulator. ठीक है, एक important चीज़ ये हो गई है. The funding power, it has been shifted to the education ministry, and the regulator, it has been empowered to impose heavy penalties that has been increased up to 10 crores. ठीक है, and this particular bill, it aligns with the new education policy of 2020, right? And the ideas, the principles here, they are in alignment with that particular policy. Yes. Next, the Shanti bill. Okay. So the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. So it was passed by the parliament in recently. So it replaces the Atomic Energy Act of 1962, as well as the Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010. Okay. And the objective here is the scaling up of your nuclear capacity to 200 gigawatt by 2047. So at the same time, we also have to modernize our regulation, liability and governance. Okay. So the main feature of this particular bill is of the opening nuclear power to the private sector. तो आपकी जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैं, दे कैन नाउ सेट अप एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. दे कैन हैंडल द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, इक्विपमेंट एक्सेट्रा. तो एंटायर सेक्टर अर्लियर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक सेक्टर. ठीक है. Foreign investment, no, it is not explicitly permitted, but it has been allowed subject to certain conditions like central government notification, DPIIT norms, on those kind of things are there. Certain things will continue to be exclusively controlled by the center. For example, uranium enrichment, isotope separation, heavy water production, spent fuel reprocessing, high level waste. So these the center will continue to handle. Now in terms of safety and regulation, so there would be mandatory safety authorization from your Atomic Energy Regulatory Board for plants, fuel handling, radioactive substances, radiation facilities, etc. Yes. And now AERB, this particular board, it has been granted the statutory status. So under earlier it used to function under your Department of Atomic Energy. Now it will be an independent legal authority. So this particular concern, it was flagged by your CAG many a times with respect to conflict of interest and regulatory subordination. तो उसके basis पे this particular statutory status, independent status has been given. Now the key controversy is with respect to the liability framework. So this particular bill, it removes the supplier liability clause. ठीक है, सप्लायर लाइबिलिटी जो क्लॉज था सेक्शन 17B of the 2010 Act, so it has been removed. So operators can no longer seek a compensation from equipment suppliers for defects. ठीक है, but it retains the contract based recourse as well as the liability for intentional acts. ठीक है. The bill also introduces graded liability caps based on the reactor size. ठीक है, पहले क्या था, इट वॉज अ फ्लैट 1500 करोड़ रुपीज कैप. तो अब आपका बेस्ड ऑन द रिएक्टर साइज होगा. ठीक है. इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, इट इज मैंडेटरी ओनली फॉर द प्राइवेट ऑपरेटर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस दैट आर एक्सेप्ट. ठीक है, ओनली फॉर द प्राइवेट ऑपरेटर्स. ऑल्सो द सेंटर हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप अ न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड. Now in terms of the penalties and dispute resolution, so introduces monetary penalties. Earlier they were absent. Criminal penalties, they will include imprisonment for grave violations. It also creates new institutions like Atomic Energy Redressal Advisory Council,
ठीक है. So this will be for grievances and disputes. Nuclear damage claims commission in case of severe accidents. Then applies will lie with the appellant tribunal for electricity. Okay, so they will listen the appeals. Now another concern is with respect to section 39 of RTI. This, it is said that it explicitly overrides the RTI Act of 20, the section 39 of this bill, it overrides the RTI Act of 2005. Okay, so this particular section, it allows the center to declare broad categories of information as restricted. तो अगर सेंटर ने किसी के इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो RTI विल नॉट अप्लाई. सो दिस विल no the appeal mechanism will not be available. ठीक है. तो ट्रांसपेरेंसी, विसल ब्लोइंग, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस जो है दैट विल बी अंडरमाइंड. सो दिस इज पर्टिकुलरली रिस्की विद द प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि एक सेंसिटिव सेक्टर है एंड दे आर एंटरिंग द सेंसिटिव सेक्टर. सो इफ वी सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस विल बी अ रिस्की थिंग. यस. Next, the Securities Markets Code Bill of 2025, the SMC bill. So India's security regulation, it was governed by three laws. Okay, that is your Securities Contract Regulation Act of 1956, the SEBI Act of 1992, and the Depositories Act of 1996. Now, because of these laws, as they developed over the decades, जब से वो बने थे, this has led to more overlaps, inconsistencies, fragmented regulation, ठीक है, rising compliance burden, ठीक है, and at the same time, the technology is evolving, the market is becoming more tech driven, ठीक है, so the situation is becoming more and more complex. So ऐसे में जो आपका बजट ऑफ 2021 था, so it announced consolidation into a single securities market code, SMC. तो अब ये बिल क्या करेगा, ये दिस बिल विल इट विल रिपील एंड रिप्लेस दीज एक्ट्स and it will create a principle based unified legal framework for the securities market. ठीक है. तो अब इसके क्या फीचर्स हैं. बेसिकली द पावर्स एंड गवर्नेंस ऑफ द सेबी इट विल गेट enhanced. So the number of board members, so that will increase from 9 to 15. Then there would be stronger conflict of interest norms. So like there would be mandatory disclosure of the direct and indirect interest of the members. Okay. The government, it will be empowered to remove SEBI members for conflict of interest, conviction if it involves moral turpitude. Then there would be statutory incorporation of the investor charter and independent ombudsman for grievance redressal as well. Okay. Then decriminalization and proportionate enforcement. So the violations, they will be classified into two buckets, that is fraudulent and unfair practices and market abuse. तो जो आपकी serious offense होंगे like market abuse, so it will have civil penalties as well as criminal liability. तो पहले क्या था, अब जो शिफ्ट है दैट इज फ्रॉम प्यूनिटिव टू रिस्क बेस्ड एंड प्रपोर्शनेट रेगुलेशन. ठीक है. तो अगर माइनर वायलेशन है तो सिविल ओनली, अगर बड़ा है तो सिविल प्लस क्रिमिनल. Then investor protection framework. So as I told you, the mandatory investor charter would be notified by the SEBI. Then time bound investor grievance redressal mechanism would be established. Statutory ombudsperson would be in there. A proper system would be established in this regard, and public consultation would be built into the regulation making, so that there is this participatory regulation would be there. Okay, so this is a new term, an important term. So now in terms of the market infrastructure and intermediaries, so there would be single consolidated framework for registration of intermediaries as well as pooled investment vehicles. Okay. So all the stock exchanges, clearing corporations, depositories, they will be governed under one single code. So the SEBI at the same time, it will be empowered to delegate functions to market infrastructure institutions. ठीक है, उनको greater role मिलेगा, as well as the self regulatory organizations.
Yes. So this basically this bill is now in alignment with the global best practices. तो हमारा यहाँ पर जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है वो स्ट्रेंथन होगा, रेगुलेटरी गवर्नेंस इंप्रूव होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वुड हैपन, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द conflicts that are happening again and again in the securities market. Doppler weather radars, DWRs. So India has now 47 Doppler weather radars installed nationwide. These now cover 87% of India. ठीक है, 87% of India, and these have special focus on the hilly and disaster prone regions, especially your western Himalayas, and they are operated by the Indian Meteorological Department for real time monitoring and forecasting. तो बेसिकली अब ये DWR करता क्या है? So basically it is an active remote sensing instrument and they emit radio waves into the atmosphere. तो अब radio waves emit की, तो then these waves hit objects like for example your raindrops, snowflakes, hail, cloud particles, etc. The part of energy is reflected back. Part of energy it will get reflected back to the radar. Now by measuring the time delay, they can calculate the distance of precipitation, and they can also, by the strength of the return signal, they can see the intensity or the size of the precipitation. ठीक है, तो बेसिकली द मेट्रोलॉजिस्ट दे कैन सी द वेदर इनसाइड द क्लाउड्स. ठीक है, तो वो चीज़ में दिस इज हेल्पफुल. नाउ व्हाट मेक्स इट डॉपलर? ठीक है, सो DWR इट मेजर्स द चेंज इन फेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स. ठीक है, तो अब इस फेज शिफ्ट की वजह से हमें यह पता लगता है कि द प्रेसिपिटेशन इज इट मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रडार. ठीक है, एट द सेम टाइम व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड विद इन द स्टॉर्म्स. तो जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है, सो सेम प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड हियर. नाउ अगर हम इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ डॉपलर रडार्स की बात करें, तो एक तो होते हैं आपके एस बैंड रडार्स. तो ये लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी रडार्स होते हैं, एंड दे आर यूजफुल फॉर हैवी रेनफॉल एंड साइक्लोन मॉनिटरिंग. सी बैंड वाले होते हैं, दे आर फॉर योर साइक्लोन ट्रैकिंग, रेनफॉल एस्टिमेशन एक्सेट्रा. And the X band, they are the short range and high resolution radars. They are useful for thunderstorms, lightning, urban weather, etc. ठीक है, सो फैक्चुअल टॉपिक GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. नाउ नेक्स्ट, हाउ AI एंड द कॉपीराइट लॉ इन इंडिया. सो हाउ इंडिया proposes टू एड्रेस द AI कॉपीराइट चैलेंजेस. तो पहली चीज़ कि इशू अराइज क्यों हुआ है. सो द जनरेटिव AI मॉडल्स दे आर ट्रेन्ड ऑन वास्ट डाटा सेट्स like your books, news, images, music. Much of this is copyrighted. ठीक है, तो अब डिलीमा ये है कि जो कॉपीराइटेड कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं AI ट्रेनिंग के लिए एट द इनपुट स्टेज, so is it a copyright infringement or does it fall under the fair dealing under India's Copyright Act of 1957? Fair dealing. So this is the concept here. ठीक है, so this particular issue, it has reached the courts now, like your ANI versus the OpenAI, and it is pending in the Indian courts. So input stage में, so there is a the legal conflict is at the input as well as the output stage. Input stage में आप मॉडल में डाल रहे हो कॉपीराइटेड वर्क, डाटा सेट तैयार कर रहे हो और अपने AI मॉडल को ट्रेन कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज लीगली एम्बिगुअस अंडर द इंडियन लॉ. अब अगर मैं बात करूं आउटपुट स्टेज की, कि AI इज जनरेटिंग कंटेंट दैट रिप्रोड्यूसेस द कॉपीराइटेड मटेरियल, तो इसको हमें ये बोलना कि ये इन्फ्रिंजमेंट है, दैट इज ईजियर. ठीक है, सो इंडियाज फेयर डीलिंग एक्सेप्शन दैट इज अंडर द 1957 एक्ट, इट इज नैरो एंड पर्पस specific, like for research, for criticism, for teaching only, and it does not clearly cover commercial AI training. ठीक है, US में this term fair dealing, fair use, it is broader in nature.
अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस पर्टिकुलर इशू पे? सो गवर्नमेंट ने एक 8 मेंबर कमेटी सेटअप की है अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, and the first part of a working paper, it has been finalized, focused on use of copyrighted content for AI training. The second part, copyrightability of AI generated works, this is under progress right now. So जो आपका वर्किंग पेपर है, इट प्रपोजेस वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देर वुड बी नो ब्लैंकेट एक्सेप्शन फॉर एआई ट्रेनिंग। ठीक है, सो इट रिजेक्टेड द टेक इंडस्ट्री डिमांड, एंड देर वुड बी नो प्योरली वॉलेंट्री लाइसेंसिंग, so it also rejected the content creators demand. Instead there would be mandatory blanket license for AI training. ठीक है, copyright holders they cannot opt out, and AI developers they have to pay a statutory remuneration, likely a share of the global revenue. तो ये मॉडल आपका आया है उनकी तरफ से। सो अगर हम अब कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज और अदर jurisdiction like European Union, Japan, Singapore, so they allow the text and data mining exceptions. ठीक है, अगर आपका कोई लॉफुल एक्सेस एग्जिस्ट करता है तो दे विल अलाउ द टेक्स्ट एंड डाटा माइनिंग एक्सेप्शंस, एंड इंडियाज अप्रोच दैट इज मोर इंटरवेंशनिस्ट। तो हमारा फोकस कंपनसेशन पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्री यूज। नाउ there are certain concerns also, like valuation problem. So it is very difficult to assess which works contributed to the model's output. डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज, किसको कितना रॉयल्टी दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजरी सेफगार्ड चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म चाहिए। तो ऐसे में ओवर सेंट्रलाइजेशन का खतरा है, देन लिटिगेशंस बढ़ने का खतरा है। सो ऑल दोज इश्यूज अराइज। Japan rate hike and the yen carry trade. So basically, recently the Bank of Japan, it has raised its policy rate to 0.75%, the highest since the mid 90s. तो अभी तक जापान में ऑलमोस्ट नियर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट चल रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली इट शोज अ शिफ्ट टूवर्ड्स मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, एकदम से टाइटनिंग नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुअल मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये एक स्टेप है। नाउ व्हाई दिस मैटर्स? तो अभी तक क्या था कि अल्ट्रा लो रेट्स थे। ठीक है, अल्ट्रा लो रेट्स की वजह से दिस वाज अ की पिलर ऑफ द येन कैरी ट्रेड। ठीक है, ग्लोबल लिक्विडिटी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स था। तो अब बिकॉज ऑफ दिस हाइक, तो जो चीप येन फंडिंग थी दैट विल बी नॉट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द करेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द येन दैट वाज देयर, सो इट विल गेट थ्रेटन्ड। तो आपका जो कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग है उसका जो रिस्क है, सो वो अब अराइज करता है। सो व्हाट, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज दिस येन कैरी ट्रेड? सो बेसिकली इन्वेस्टर्स दे कैन बोरो चीपली इन द जापानीज येन। ठीक है, एंड देन दे कैन इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग फॉरेन एसेट्स लाइक बॉन्ड्स, इक्विटीज एक्सेट्रा। तो जब आपका इन जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ज़्यादा हो तो वो प्रॉफिटेबल होगा ऑब्वियसली। तो ऐसे में आप ज़्यादा अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर जापानीज़ रेट इंक्रीज़ हो जाए तो जो आपको इंटरेस्ट एडवांटेज मिल रहा है ऑफ बोरिंग इन येन, सो दैट विल गेट हैम्पर्ड, दैट विल रिड्यूस। ठीक है, सो अब इस वजह से इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, दे विल सेल देयर ओवरसीज एसेट्स, दे विल बाय बैक द येन, सो दिस विल लीड टू कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट्स। तो ऐसे में एक एपिसोडिक वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, सो दैट कैन बी द इम्पैक्ट। यस, अगर हम अब स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, सो several Indian entities, especially your PSUs, infrastructure firms, they have yen denominated loans like your power sector, infrastructure sector. तो अब ऐसे में अगर येन अप्रिशिएट करता है तो रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, द अनहेज्ड borrowers they face forex and market
so mark to market losses, MTM losses. There would be pressure on earnings, cash flows, balance sheets, etc. At the same time, if the yen funded capital it retreats, so there can be a potential portfolio outflow, there can be a pressure on the Indian assets and currency. ठीक है, बट ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो वो चीज़ भी हमने ध्यान में रखनी है. सो बेसिकली इफ़ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ योर इकोनॉमी, तो ये आपको हैंडल करने में, रेट हाइक को हैंडल करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए. यूथेनेशिया लॉ इन इंडिया. So basically, Supreme Court is reconsidering whether a life-standing treatment that can it be withdrawn in the case of a person named as Harish Rana, who has been in the persistent vegetative state for past 13 years. So medical boards ने बोला है कि there is almost negligible chance of recovery. The court it has signaled that keeping a patient alive indefinitely through artificial support it raises the constitutional questions of dignity under your article 21. तो कोर्ट का ये बोलना है. सो ऐसे में ये सवाल उठता है कि व्हाट इज़ असिस्टेड सुसाइड, व्हाट इज़ पैसिव यूथेनेशिया. सो असिस्टेड सुसाइड दैट इज़ योर एक्टिव यूथेनेशिया. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कोज करते हैं डेथ, लाइक सम लीथल इंजेक्शन. सो दिस इज इलीगल, ये इलीगल है इंडिया में. एक्टिव दैट इज असिस्टेड सुसाइड. तो अगर ऐसा कुछ होता है, सो दैट विल बी अ मर्डर, इट विल कैटेगराइज्ड एज कल्पेबल होमिसाइड, अबैटमेंट अंडर योर इंडियन लॉ. एट द सेम टाइम क्या लीगल है, दैट इज पैसिव यूथेनेशिया, कि जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको हम विड्रॉ कर लें, उसको हम हटा लें. तो यहाँ पर ओमिशन चल रहा है, यहाँ पे एक्शन नहीं चल रहा है. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल अंडर सर्टन स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21. सो आर्टिकल 21 दैट इज योर राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी. तो देर इज नो जनरल राइट टू डाई. ठीक है, बट अ लिमिटेड राइट टू डाई विद डिग्निटी एग्जिस्ट्स when the patient is terminally ill or is in a persistent vegetative state and the natural death process has begun and the continued treatment is futile or invasive. तो इन सिचुएशंस के अंदर लिमिटेड राइट टू डाई विद डिग्निटी आपके आर्टिकल 21 के अंदर है. तो अगर आपको याद होगा 2011 अरुणा शोनबाग केस, तो द कोर्ट इट हैड रिजेक्टेड द जनरल राइट टू डाई एंड अलाउड द पैसिव यूथेनेशिया इन प्रिंसिपल. तो ऐसे में उन्होंने कुछ आपके कंडीशन सेटअप की थी दैट द फैमिली और द नेक्स्ट फ्रेंड दे विल हैव टू डिसाइड, अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट वुड हैव टू बी अंडरटेकन, मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी का वहाँ पर आपका अप्रूवल लगेगा. सो द जुडिशियल ओवरसाइट दैट वाज मैंडेटरी. इन द 2018 कॉमन कोर्स the constitution bed the constitution bench it declared the right to die with dignity as the part of article 21. ठीक है, सो दे लीगली recognize the withdrawal or withholding of life support and they also brought out the concept of living wills, that is the advanced medical directives. तो बट यहाँ पर क्या criticism था, that the safeguards they are very complex in nature. In 2023 the guidelines they were simplified. उन्होंने द कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ नॉट वर्केबल. So the reforms they brought out certain reforms like the advanced directives they had to be attested by a gazetted officer, storage in digital health records, removal of collector and mandatory magistrate visits, hospitals would only be informed about JMFC before withdrawal. तो उस तरीके से डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन किए. तो अभी के लिए व्हाट इज़ द करंट लीगल पोजीशन दैट यू शुड रिमेंबर, दैट एक्टिव यूथेनेशिया इट इज़ प्रोहिबिटिव, पैसिव इज अलाउड विद सेफगार्ड्स एंड द एडवांस्ड डायरेक्टिव्स दे आर लीगली वैलिड. MH60R Seahawks. So the Indian Navy it has commissioned its second MH60R Seahawk helicopter squadron. Right, the first squadron it was inducted in 2024. So with these two squadrons operational, the fleet is now fully integrated into the naval operations.
तो बेसिकली इट इज़ अ फैक्चुअल टॉपिक. So ये Seahawks, they are multi-role maritime helicopters that are developed by your Lockheed Martin. ठीक है, so they are a naval variant of Black Hawk and they were acquired by India under a 15,000 crore rupees deal for 24 helicopters. तो जो हमारे Sea King helicopters थे उनको replace करते हैं, right? So they are involved in anti-submarine warfare, anti-surface warfare, surveillance, search and rescue, vertical replenishment. So these kind of operations are there. So key technologies and digital sensor suite, multimodal maritime radar, dipping sonar, electronic support measures. So different capabilities are there. So they can counter, detect, track, neutralize submarines, hostile surface ships को target कर सकते हैं, and they will be helpful in tackling terrorism, piracy and drones. So more important, the topic is more important from your prelims point of view. Data exclusivity and its implications for India's generic drug industry. तो जब भी कोई फार्मा कंपनी एक नया ड्रग डेवलप करती है, सो इट सबमिट्स अ क्लिनिकल ट्रायल डाटा कि कितना सेफ्टी है, कितना एफिकेसी है, तो ये डाटा वो सबमिट करती है रेगुलेटर को. विदाउट डाटा एक्सक्लूसिविटी, जो कि करंट इंडियन सिस्टम है, the regulators can rely on this data to approve generic versions based on cheaper bioequivalence studies once the patent expire. But with data exclusivity, clinical trial data cannot be relied upon for a fixed period, say for 6 to 10 years. So the generic companies, they have to either wait for the exclusivity to end, or they have to conduct the costly clinical trials themselves. Okay, so basically we can say that the data exclusivity, it protects the data, while patents, they protect the invention, and together they extend the market control. ठीक है, तो एक्सक्लूसिविटी का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट ओवर द क्लिनिकल ट्रायल डाटा. सो जो आपके जेनरिक अप्रूवल हैं वो रुक जाते हैं 6 से 10 साल तक अगर आपके पास डाटा एक्सक्लूसिविटी है. ठीक है. India, it has historically rejected the data exclusivity to protect access to obviously affordable medicines, the generic medicines. तो अब DPIIT ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली फार्मा स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, एंड द डिस्कशंस दे फोकस्ड अपॉन हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस डाटा एक्सक्लूसिविटी. ठीक है, गवर्नमेंट का ये बोलना है कि इसकी वजह से हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा. ठीक है, और इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर है जो वो घटेगा. ठीक है, बट ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है दैट देर इज़ नो बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इन दिस रिस्पेक्ट. तो आपका कोई मैंडेटरी यहाँ पर वो नहीं है अंडर योर WTO और ट्रिप्स. ठीक है, इवन द EFTA एग्रीमेंट दैट ओनली कॉल्स फॉर फ्यूचर डिस्कशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, why this particular thing matters for India? Number one, India's pharma industry lies, the strength of this industry lies in the cheap generic medicines. 90% of Indian pharma companies, they are generic focused. तो absence of this data allows early regulatory approvals. तो आपके पास जो पेटेंट चैलेंजेस हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग है, तो वो सब चीज़ें एड्रेस होती हैं. तो जो अब ये अफोर्डेबल ड्रग्स आप बना पाते हो, तो दे आर रैपिडली अवेलेबल बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट्स एज वेल एज द ग्लोबल मार्केट्स. तो अब ये डाटा एक्सक्लूसिविटी की वजह से आपके जेनरिक्स हिट हो सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे में इम्पोर्टेंट ये भी है कि ड्रग रेगुलेटर का क्या रोल है. तो जो आपका CDSCO है, दैट इज़ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अक्टूबर में एक नोटिस जारी किया था, इशू किया था, हाईलाइटिंग द अनइक्वल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द फर्स्ट एप्लीकेंट एंड द जेनरिक्स. ठीक है, सो द क्रिटिक्स नाउ से दैट द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस, इट पेव्स द वे फॉर डाटा एक्सक्लूसिविटी इन इंडिया. ठीक है, तो वहाँ से आपका CD जो SCO है, सो दैट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो.
एलिफेंट ट्रेन कॉलिजन्स, तो आपने देखा होगा इन द न्यूज़ रिसेंटली 7 एशियन एलिफेंट्स दे वर किल्ड व्हेन राजधानी एक्सप्रेस इट हिट द हर्ड इन असम. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ ट्रेन इंसिडेंट्स दे आर अ मेजर कॉज ऑफ एलिफेंट डेथ्स इन इंडिया. तो जहाँ पर इंडिया हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स हैं इंडिया में, almost more than 1,000 elephants they have died due to known natural causes. चाहे वो electrocution हो, that is the largest cause, and the train collisions, that is the second largest cause. ठीक है. अब the elephants they are obviously reluctant to cross the railway tracks especially at night, but collisions हो सकते हैं. ठीक है, especially during crop harvest seasons, and they often involve male elephants. ठीक है, क्योंकि दे आर लिंक्ड विद क्रॉप रेडिंग बिहेवियर. तो अगर आपकी रेल लाइंस दे कट थ्रू फॉरेस्ट, सो दैट कैन डिसरप्ट देयर ट्रेडिशनल माइग्रेशन पाथ्स. तो ऐसे में द मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल एज पर IUCN इज avoiding elephant habitats and corridors while planning your rail projects or road projects. It is the most effective solution. ठीक है. So mitigation, it should not replace avoidance. It should only complement it when your avoidance is not possible. That is when avoidance is impossible, तभी आपका mitigation picture में आना चाहिए. Now अब mitigation कैसे कर सकते हैं? So the answer is wildlife crossings and fencing. ठीक है, चाहे अंडर पास हो चाहे ओवर पास हो, तो वो चीज़ आपको फिर यूज़ में लानी पड़ेंगी. एंड इट शुड बी डाटा ड्रिवन. मेक यूज़ ऑफ GPS, कैमरा ट्रैप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोलिजन हॉटस्पॉट्स, देन फेंसिंग शुड बी देयर. ठीक है, फेंसिंग, अच्छी खासी फेंसिंग की ज़रूरत है. एंड द टेक्नोलॉजी शुड बी मेड यूज़ ऑफ, लाइक FLRI cameras, that is the forward looking infrared cameras, ground based sensors, make use of AI, machine learning. ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको इस्तेमाल में लानी पड़ेंगी. So we have such existing initiatives like Northeastern Frontier Railway. It has developed a AI based elephant detection system. Similar system has been introduced on the Kerala Tamil Nadu border also, and they have shown certain promising reduction in the collision risk. New NPS norms. So the PFRDA, that is the Pension Fund Regulatory and Development Authority, it has notified the NPS exit and withdrawal amendment regulations of 2025 recently. So what are the major reforms here? Number one, so higher lump sum withdrawal. So this is one, that is for the non-government subscribers the lump sum has been increased to 80% of the corpus. पहले ये आपका 60% था. Mandatory annuity that has been reduced to 20%. पहले ये 40% था. For the government subscribers there is no change. So 60 plus 40 जो आपका है that will continue. Now if I talk about the corpus based exist options, तो जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपका अप टू 8 lakhs है, so 100% लमसम और 80% लमसम प्लस 20% एन्युटी इज अलाउड. इफ़ यू आर 8 to 12 lakhs, then 6 lakh लमसम प्लस बैलेंस एज एन्युटी और 80-20 का रेशो रख सकते हो. एंड इफ़ यू आर अबव 12 lakh, then maximum 80 lump sum or minimum 20% annuity. So these are some of the exit options. If I talk about the exit age, so withdrawal can now be deferred up to the age of 85 years. पहले ये 75 years था. And the subscriber, they can defer lump sum withdrawal also. They can also defer annuity purchase. So this will help the markets. So this will help them manage the market volatility as well as longevity risk. ठीक है. डेथ ऑफ सब्सक्राइबर अगर बात करें, सो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स 100% लमसम और 100% एन्युटी. इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अप टू 8 lakh 100% लमसम वुड बी अलाउ. इफ द कॉर्पस इज हायर देन ग्रेडेड ऑप्शंस आर अवेलेबल. ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट
फीचर्स डिफरेंट चेंजेस किए गए हैं अंडर द न्यू एनपीएस नॉर्म्स, अगेन मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आपको बाकी ये पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स एसोसिएटेड विद पेंशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन देम, राइट? So this is what was to be discussed in the week 3 current affairs. So in the next video we will be taking the week for current affairs of December. Thank you.